Yes, dear students, from here we will start the chapter A Long Walk to Freedom. In this first part, Nelson Mandela is telling his experience of inauguration, which was held at a amphitheater of Pretoria. Let us see what he said in his speech to the people. 10th May dawned bright and clear. 10th May, he is telling the date on which date he took the oath of President of South Africa. 10th May dawned bright and clear. It was very bright, shining, clear day. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Besieged by meaning is given to be surrounded closely by. पिछले कई दिनों से he had been surrounded by the dignitaries. Dignitary means very important people and the world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. देखो इसकी ऐसी जीत थी. Before inauguration, many famous leaders, dignitaries started visiting Nelson Mandela. Why? This is the question. Why they came there? To give respect to Nelson Mandela. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. ये जो inauguration है would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. साउथ अफ्रीका की धरती पर इतनी बड़ी गैदरिंग और वो भी इंटरनेशनल लीडर्स की शायद ही कभी हुई हो. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. As we read, हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेरेमनी कहाँ हुई. Union Buildings in Pretoria. For decades this had been the seat of white supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Nelson Mandela says that for decades, कई दशकों से, देखो तो century, 100 years, decade means 10 years. For decades, this had been the seat of white supremacy. White लोगों की supremacy, उनका अधिकार था. They were ruling over black people. And now it was the site of a rainbow. जैसे rainbow में colors होते हैं. Gathering of different colors and nations. अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग कलर्स के लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं. किसके लिए? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल मीन्स जिसमें जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा. ऐसी सरकार आएगी दैट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट. कोई भेदभाव नहीं होगा. भेदभाव का मतलब अपार्थाइड पॉलिसी विल बी डिमिनिश्ड फॉर एवर. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. और उस दिन बताता है नेल्सन मंडेला कि मेरे साथ मेरी डॉटर, मेरी बेटी जिनानी थी. On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. पोडियम जहाँ पर शपथ लेते हैं. Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. सबसे पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ किसने ली? स्वॉर्न इन का मतलब होता है शपथ लेना. टू टेक ओथ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वॉर्न? टू टेक ओथ, शपथ लेना. ओथ. देन नेल्सन मंडेला. तो मिस्टर डी क्लार्क वर द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट. And who was the first? Thabo Mbeki. Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. But it is very easy to learn these two names. And you see Thabo Mbeki. T is coming. It is starting with the T. And it is first. And Mr. D. Clark
D, starting from D, he was second. So when it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. Nelson Mandela said that जब उसकी बारी आई, I pledged, मैंने कसम खाई, to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. उसने शपथ ली कि मैं ओबे करूँगा, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन की जो इमेज है उसको बनाए रखूँगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. आई विल डिवोट माई लाइफ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड. नाउ हेयर ही इज मेंशनिंग कि जितने भी गेस्ट, नियर अबाउट 140 कंट्रीज़ के लीडर्स वहाँ पहुँचे थे, तो मैंने अपनी स्पीच में क्या कहा. हिज स्पीच इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर. कैन सी क्वेश्चन कैन कम. व्हाट डिड नेल्सन मंडेला से इन हिज स्पीच? लेट अस सी. टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर confer glory and hope to newborn liberty. Confer meaning is given, give. कि आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं to give glory and hope to newborn liberty. ये liberty newborn है, नई पैदा हुई है. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. Human disaster, बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की. डिजास्टर का मतलब क्या होता है? तबाही होता है वैसे तो, डिस्ट्रक्शन. नेल्सन मंडेला सेज दैट मैनी ह्यूमंस, मैनी पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स फॉर द सेक ऑफ नेशन. इतना डिजास्टर हुआ है तो उसमें से ये सोसाइटी तो पैदा होनी थी. मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी पैदा होनी थी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर पूरी ह्यूमैनिटी को गर्व होगा. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. Further he says, we who were outlaws meaning is also given. Outlaws, here you can check the meaning. Outlaws, because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relation with South Africa. कि हमारे साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड पॉलिसी की वजह से बहुत से लोगों ने हमारे साथ रिलेशन ब्रेक कर लिए थे. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. और आज हम क्या बन गए? होस्ट. एक होता है बेटा होस्ट और गेस्ट. होस्ट होता है जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है. तो नेल्सन मंडेला इज फीलिंग प्राउड दैट ऑन द सॉइल ऑफ साउथ अफ्रीका वी हैव बिकम होस्ट, एंड सो मेनी डिग्निटरीज एंड लीडर्स, इंटरनेशनल लीडर्स हैव गैदर्ड हेयर ऑन दिस सॉइल. तो ही इज फीलिंग प्राउड कि वी हैव गॉट द रेयर प्रिविलेज to be the host to the nations. I hope you are understanding. Next is we thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. Here Nelson Mandela thanks all the international leaders, distinguished, famous, important international guests for having come to take possession with the people of our country. Here Nelson Mandela says that it is a common victory for justice, for peace and for human dignity. कहते हैं ये जो जीत हुई है, इट्स कॉमन फॉर ऑल.
कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, न्याय, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन की जो डिग्निटी है, इमेज है, वो बनी रहे, उसकी एक ये कॉमन हिस्ट्री विक्ट्री है। फर्दर ही सेज वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। हमने आखिरकार पॉलिटिकल इमेंसिपेशन हासिल कर ली है। इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। नाउ दे हैव गॉट अ पावर, अपनी शक्ति हासिल कर ली है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. We pledge ourselves, pledge means शपथ लेना, to liberate all our people, जितने भी हमारे यहाँ लोग हैं सबको आज़ाद करते हैं, from the continuing bondage, जो लगातार ये जो जंजीरें, गुलामी की जंजीरें हैं, बंधन, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी, डिप्राइवेशन, अधिकारों से वंचित रहना। The meaning of deprivation is given here, state of not having one's rightful benefits. Suffering, gender and other discrimination. There will not be any discrimination in South Africa based on anything. Further, Nelson Mandela says, never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Never, never and never again. He is giving assurance and he is declaring that this beautiful land shall never be again experience the oppression of one by another. मेरे होते हुए इस कंट्री में कभी भी कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन मीन्स एक्सप्लॉयटेशंस। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस a human achievement. He is saying that the sun which has risen, ये जो आज़ादी का सूरज उगा है, the sun shall never set on so glorious a human achievement. ये ग्लोरियस अचीवमेंट, बहुत ही शानदार अचीवमेंट बताई है नेल्सन मंडेला ने। इट्स ग्लोरियस, स्प्लेंडिड, दिस ह्यूमन अचीवमेंट, द सन शैल नेवर सेट, इसका जो सूरज है कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम reign, God bless Africa. These were the last words of Nelson Mandela of his speech कि let freedom reign, आज़ादी को राज करने दो। reign means rule over. let freedom reign, इसको राज करने दो, शासन करने दो। God bless Africa. So this was the speech of Nelson Mandela addressing the international leaders. The oral comprehension check question in your notebook. This is the first part only, second we will do tomorrow. First question I am discussing with you, where did the ceremonies take place? All of you know very well. Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? Here you have to write Union Buildings, Pretoria, Amphitheatre. Second question is, can you say how 10 May is an autumn day in South Africa? Yes, very simple. Autumn day, autumn season होता है, पतझड़। उसमें क्या होता है? The old leaves sheds of the trees and the new leaves start sprouting. पुराने पत्ते झड़ते जाते हैं, पतझड़। Similarly, in South Africa, the old government, white supremacy, shed their leaves. उनके पत्ते झड़ गए and new government, which government? Nelson Mandela government started in South Africa. So you have to write these questions. For the third question, you have to do, at the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? I have already told you. Human disaster means destruction, the people, those who sacrifice their lives, and exploitation of the black people by the white people. And what is the glorious human achievement? He speaks of the end. In the beginning he says human disaster और लास्ट में कहते हैं human achievement. किस achievement की बात कर रहा है? I have explained
achievement of getting liberty, getting freedom from all bondages, poverty, etc. As I told you. Next question is fourth. What does Mandela thank the international leaders for? किस लिए इंटरनेशनल लीडर्स का थैंक्स करता? Because they came there to respect, because they became the part at the glorious moment of the common victory for peace, justice, freedom, human dignity. Next is fifth question. What ideal does he set out for the future of South Africa? साउथ अफ्रीका के लिए क्या आदर्श वो सेट करता है कि साउथ अफ्रीका में क्या होगा और क्या नहीं होगा. So dear students, up to this you have to complete today. Next part, remaining part, we will do tomorrow. During this part, if you face any problem, you should discuss on my contact number personally. I hope that you will not face any problem. Thank you. Have a nice day.